अच्छी है. मेरे को वॉल्यूम सिर्फ 20-21 तक रखने की ज़रूरत पड़ती है. आई थिंक क्लैरिटी इज़ वेरी गुड. बेस इज़ ओवरऑल आई वुड से ओके. हालांकि थोड़ी थम्पी बेस है और थोड़ा सा जो साउंड फील्ड है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सराउंडिंग या फुलर हो सकता था. वेरीज एक्चुअली कार की अकाउस्टिक्स पे और रिफ्लेक्शंस कैसे हो रही हैं उस पर भी बहुत मैटर करता है. दिस इज़ 8 स्पीकर सिस्टम, सेंटर स्पीकर भी है, बट समा वो फुलर फील नहीं आती है. आर्क्यूमिस में मैंने देखा, आर्क्यूमिस में थोड़ी सी फुलर साउंड थी, बट क्लैरिटी वाइज डेफिनेटली बोस इज़ मच बेटर. वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी बहुत अच्छी. जैसा आपने सुना, मैं कुछ और भी सुनाने की कोशिश करता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू NCS type of music only. Let's see if I get something which is having good bass and all. The touch of yours is what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how to feel. Damn, I hate it. So I hope you could make out
how it sounds like in Bose. I think थोड़ा और एक और जो ये step कर सकते हैं, that they can give some more settings in the equalizer and all, which will probably help define further. I've seen some people have although इसमें inbuilt amplifier है जो passenger side है, front side की उसके नीचे, but some people have also added add-on amplifier. I don't think so, but हाँ अगर किसी का सिर्फ Bose के पीछे अगर लेना है ये वेरिएंट, I don't think so it is a kind of a deal breaker. Yes, this is the best you can get in this range. So that's it for now. Hope you guys liked my review. Please stay tuned and watch out for more videos on my channel. If you like it, do like and subscribe, and do share your comments in the comment section below.